Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake, lie और imagination. आप सबका इस सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका बहुत आभारी भी हूँ कि आप सब लोग इतने चाव से हमारे शोज देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और भी कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव शो में जुड़िए। लाइव शो है आज हमारे साथ द स्पेशल गेस्ट टुडे हैज बीन ऑलरेडी अनाउंस्ड एंड विदाउट डिले आई विल ब्रिंग इट ऑन। जय हिंद एंड वेलकम टू वाइस एडमिरल सिन्हा, शेखर सिन्हा। Namaskar, Jai Hind. नमस्ते, जय हिंद। Hadiji, it's a great pleasure coming back to you and your viewers. आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू। what a experience you carry and plus American forces better than anyone else. आप तो उनके साथ डेली इंटरेक्ट भी करते हैं as part of the Indian Navy missions that you have. ये मालदीव्स में आपने टॉपिक बोला, इसे थोड़ा डीप जाएंगे। तो आपने बोला व्हाट इज गोइंग ऑन और एक अच्छा सा टॉपिक भी आपने मुझे दिया। सो अब मालदीव्स में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ विद ऑल द थिंग्स हैपन एंड मालदीव्स अगेन आस्किंग फॉर एड, ये सब पूछ रहे हैं मालदीव्स। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए आदिश जी और हमारे जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस चैनल पे, मालदीव हमारा बहुत करीब का नेबर है, हमारा पड़ोसी है और एक देश है जो कि समंदर की सतह से काफ़ी नज़दीक है। तो उनको क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो that is possibility that the climate change will have a very adverse impact on them. As you are showing on the map, you see the size of Maldives with respect to India. Very difficult to spot it on the map. It's not a very. There are a large number of islands, but the total area is not very big. So, being a big neighbor, being a more, shall I say, economically stronger, very populous nation, militarily stronger nation, it is the duty of the Indian government and Indian people to see that the neighbors are also taken care of. As you know, that Prime Minister Modi has got this acronym of SAGAR, meaning that the security and growth for all in the region. So that apart, being a good neighbor, we always give a helping hand to Maldives, and so do we to all other our neighbors. But as far as the seas are concerned, we don't have many neighbors because the sea is very wide. India has got a very large sea area. So for a long time, for many, many years, from the time Maldives became independent, India has been supporting their cause. As you know, in the islands, there are problems of fresh water, there are problems of food. They are not self sufficient. So, most of the food items actually go for India for their day to day running. And in Maldives, the tourism is the main industry, and therefore, the Indian government also supports the food security of those areas. Uh, Maldives is slightly late entrant to the democracy. We had a dictator in Mr. Gayoom who ruled that country from the time it became independent. But for last about 10, 14, 15 years, they've reverted to democracy, and Mr. Nasheed was the first president. Um, Obviously, it's a very nascent democracy, so there is nothing is perfect. And this is a multi-party democracy. Mr. Nasheed was deposed in a coup, and Mr. Wahid took over as the president because he was the vice president. But there was an election, and in that election, Mr. Nasheed lost the election, and Mr. Yamin became the president then. Now, the general perception is that Mr. Nasheed apparently he had more tilt towards India. He was more favorable to Indian support, whereas Mr. Yamin was not. He was more favorable to Chinese support.
Now, here I want to put it across, it doesn't matter who the president is. The government of India supports the people, supports the system, supports the institutions of democracy. And we have a very good equation with both the parties. But it is a sovereign country, it's an independent country, and therefore, whatever decisions they take as to who to take help from, it is their the prerogative. So we don't interfere on those things. But what is happening now is after Mr. Yamin, Mr. Soli came to power, who was seen more India was his favorite country, and he took a lot of support from India, and India continues to provide support even to this government. But in the last election, the gentleman who has been elected president is Mr. Moizu, who is a candidate of Mr. Yamin, who was China inclined, and Mr. Moizu is also from the same stock. He feels that India has been sort of overbearing on Maldives. He may be having his reasons, but as far as I know, having seen that country very closely, having been in the area of help of the Western Naval Command, which I headed for many years, I don't think we have any overbearing. Whatever projects have been signed, they have been signed with the government on the request of the Maldives government. So whatever infrastructure development, whatever support we are giving is because the government wanted it. So what has happened is now that after Mr. Moizu has come to power, his election uh, campaigning was on India out campaign because India had given them two helicopters and one Dornier aircraft for casualty evacuation. They have a very large number of far-flung islands, and if somebody falls sick, they have to be taken out, and the only way to take them out is by air. Either it is by helicopter or by Dornier aircraft in case there is an airfield around. And so far, in last 5 years, we have had almost 500 casualty evacuations. So people have survived. 100 were almost on deathbed who have been pulled out. So I think that the plank on which Mr. Moizu fought the election, and he won. Obviously, there are a lot of people who believe that India should be out. And he's been saying that Indian troops are here. Not really. These are the maintainers. We have our own military aircraft are maintained by military people. They are technicians. They are not soldiers, really. Well, they are in uniform, but they're tasked with the specialists. They're aircraft specialists. So there were about 80, 85 of them for three aircraft, and they were maintaining the aircraft. So they said, okay, you go. So there was a committee formed, and the Indian technicians in uniform, I would say, they have left that country. They have come back, and I think there are few who are left. I think they have to leave by 10th of May. So his speech, Mr. Moizu's speech was, moment he took over, he went to China. He signed some 20 agreements, and one of the agreements is that China will provide free military aid to Maldives. Whatever military aid, we don't know what is the agreement like. But China is not in very friendly terms with India at the moment, and their presence in the neighborhood is a matter of security concern. More so because China and Pakistan are very close to each other. Pakistan is known adversary of India from 1947 onwards. So therefore, the concern of Indian government is that if the Chinese are in the vicinity and they are monitoring the movements of the Indian aircraft, Indian ships, and submarines, then as a security wise, it is not a very healthy thing to happen. So, but now as Mr. Moizu is settling down in his job, he is realizing that for day to day running of that country, Indian assistance is required.
And therefore, what you're hearing for the last 4 or 5 days is because his staff has given him the briefing now, that saying that, look, you can't say that you don't want to have anything to do with India. India is your next door neighbor, 140 kilometers, the nearest island. So you better make this statement. So he made a statement that India is our very closest neighbor and we are allies and we are old friends. Basically, the realities are dawning into him. But before they could ask for this, the Indian government had already renewed the contracts, which were for day-to-day rice and pearls and lentil, water and eggs and what have you, every day, and oil. I mean, the entire oil is supplied by India, the petroleum product. So I think he's generally understanding what is happening. But the government's only concern is the Chinese presence can be little security concern for India. So that is where we are. How big is a Chinese gorilla for Indian Navy? Like the अगर उसको बोलूं कि gorilla in the room is China, it's threatening India on all sides. And I was hearing some strategic reports जो आ रहा है कि China जो है, when it thinks that they are weak on the land, they focus on the sea. When they are weak on the sea, they start focusing on the land. So how do you see that situation? Because अभी हम मैप देख रहे थे, एंड चाइनीज नेवी 3 ships ओशनोग्राफिक सर्वे शिप जो है बे ऑफ बंगाल में खड़े हुए हैं. अमेरिका में, यू आर इन यूएसए राइट नाउ एंड you know हाउ अमेरिकन मीडिया इज ट्राइंग टू स्केयर, डरा रही है अमेरिकन को कि चाइना इज सच अ बिग नेवी, और अभी उन्होंने अनाउंस किया दिया द बिगेस्ट एयरफोर्स नाउ एंड ऑल दिस थिंग्स दे आर डूइंग. तो हाउ डज इंडिया ऑन द नेवल कैपेसिटी ट्रीटिंग चाइना? Adiji, you are absolutely right. Your strategic understanding is absolutely bang on. It is exactly how it is. Um, China and India have had a border issue for a long time and it's still on. We still have about 50,000, 60,000 troops deployed and absolutely eyeball to eyeball in many areas. And it's still not sort of disengagement has not taken place in at least two areas. So what we are seeing is that China is obviously very hostile on the border. They have this little expansionist approach. They do what we call salami slicing. Inch by inch, they will get into your territory, and this is what they have done on the periphery in every country. You see Xinjiang, you see Mongolia, you see Tibet, uh, you name it, and all the periphery is inching forward, and that is how they have secured their periphery. Now we have also noticed that the as China is growing, as you know, it is the second largest economy of the world, and is still growing. And unfortunately, the oil requirement, the petroleum product, etc., China is not self-sufficient, and most of it comes from the Gulf region, some from Africa, and some from South America. Now, all this requires the transportation of the crude oil on the sea. Big tankers, 8, 9 tankers have to carry oil on a continuous basis, 365 days in a year. And China wants to secure its energy lines because of its growth and for the energy security, which is fair enough. But unfortunately, most of China's deals are very opaque. As you know, that it has begun to influence the Indian neighbors. It has influenced Sri Lanka. It is influencing Maldives. Pakistan is completely in their pocket. Bangladesh, partially so. Myanmar by force, yes. Uh, Thailand, up and down. So the Chinese theory has always been to win a war without fighting. It's Sun Tzu's great, proverb. And this is what they do. They will come in your neighborhood, they will keep monitoring, and they will keep taking advantage of that. And they will always use somebody else to fight your battle, except what is happening in the borders of Ladakh. Uh, the and we have seen that, and particularly smaller countries, China is quite hostile, as you can see in South China Sea.
Spratly Island. It has occupied Paracel. It is threatening Taiwan every day. You know much about cross strait sort of relations because it is the biggest challenge that US is facing right now. Philippines, as you've seen that off late in the second Thomas Shoal and prior to that in Scarborough Shoal. This is an ongoing thing that China wants to expand itself, and it will give you some fictitious historic reason that it used to be mine and therefore it is mine. So we know that China is also trying very similar thing in the Indian Ocean. As I mentioned, that all our neighbors are now have very big influence of China, and China's the deals are not very transparent. They're quite opaque. For example, they will say, okay, I'll give you a loan. The interest rates are very high, and if you cannot pay in time, then we will convert into equity, and that equity will be that if you can't pay, if you can't, then in the return to equity, you give us some land, you give us some port, give us some airport where I can operate, and they will operate in a dual function. Now, when you have military aid being talked about between China and Maldives, and you've got a PLA delegation, I have never heard of this. It all starts with the civilian leadership who have an agreement, and not the military. That's not how the democracies do. So we have this good reason to believe. Now, what you see, China's three research vessels, they're actually a lot of espionage is being done by them. It can track the missiles, and India is in a missile firing zone at this time. They're doing a lot of missile firing because of development. And we have two nuclear neighbors who cannot be relied upon. So, we need to protect. We are a big country, 140 plus billion, the most populous country in the world. So, governments are always concerned about people's safety. And therefore, we have to be militarily quite strong. China's navy is fairly strong, and the number of ships have become more than the US navy ships, and that is bothering the US no end. And therefore, day before yesterday, Australia, Japan, Philippines, and US have signed an agreement that for free and open sea, their militaries will come together, governments will come together, and I can see that this is a very formidable agreement, which is really catching the bull by the horn. And I think that the Chinese got to be worried because if these four navies are going to be together, the Chinese, the PLA Navy, better not take any guzzles with these countries and prevent them from doing what they're doing. So I think that the we are also concerned, just like the U.S. Navy is. But we can say that somebody coming from outside, we are a resident navy, and therefore we have an advantage of being close to our home. No matter where does China come from, he comes from outside, and when he comes from outside, he has his own difficulties. So, what China is going to do is it is going to use Pakistan as a proxy. And because Pakistan is a known adversary, it will palm off all responsibility to Pakistan for any trouble which is being created in the Indian Ocean region. And they have given ships, they have given submarines, they have given people, they have given aircraft to Pakistan, and China will wash off his hands. They say, no, I'm not doing anything, it's your own problem with Pakistan, sort it out. But actually speaking, it is the fighting for China will be done by the Pakistanis. So we have concern. We not that we are worried and scared. No, we are concerned, and we are watching these developments and taking the necessary action to see that our people are safe, our borders are safe, our progress is safe. We are also progressing at the moment with the highest growth rate in the world. And therefore, China is worried. China basically wants to displace the US from the leadership of the world. But it has a problem in Asia. It has got India. So in the step towards moving the US out, they will have to confront India. And India is a democracy just like the US.
And as you know, we have a Quad, we have a Malabar, four democracies that determine that, freedom of the sea, freedom of operation, those things will continue. We don't want China to create any of South China Sea problem in the Indian Ocean. That is our concern, and that should not happen. There are methods which are going on. As far as Maldives, Sri Lanka, swinging to China, swinging to India is concerned, in the international relation, there is a theory of hedging. Now, when a country which is not so economically strong, which is not so militarily strong, and it has got two neighbors who are very huge and what is called the overbearing, then they will always do something which is to their advantage of their own countries, rightly so. So this hedging is going to go on, and it is democracy is all in the vicinity. Very little Indian government can do rather other than to cooperate with the government in power, keep in touch with the opposition because they are the ones who will come back in power. So this is exactly where we are. We have really nothing to do with their internal affairs, but the worry is that they are so close that it should not become a security threat to India. So that is how it is, Adiji. ये चाइना का रिकॉर्ड तो ऐसा है, एक दिन आके मालदीव से बोलेगा कि आज से हमारा एयरपोर्ट हो गया, दे ऑक्यूपाई एवरीथिंग। और मालदीव्स के लोगों को भी शायद मालूम होगा। बट लाइक इफ आई लुक एट द इंडियन नेवल ऑपरेशंस में देखता हूँ मैं, और दर्शकों को बता दूं कि ही इज अ वेरी renowned naval aviation expert also, Admiral सिन्हा जी। एंड तो नेवल एविएशन की जब हम बात करते हैं, so Indian Navy के जो actions हैं has even spooked United States also and the West. INS Kolkata and India did not put out the latest ones, INS Visakhapatnam, because maybe they were deployed somewhere else. और एक रिपोर्ट भी आया था which people criticize also कि 11 इंडिया के destroyers और 11 submarines are in the ocean. और आपने तो पहले ही बताया था कि इंडियन ओशन इज आवर रीजन, वी वोंट लेट इट गो। पिछले शो में आप बताया था। फॉर व्यूअर्स हु कैन वॉच हिज लास्ट शो, यू विल सी द डिटेल्स ओवर देयर। सो हाउ डू यू सी द naval dynamics in due to this Maldives action changing in the Indian Ocean region? Adiji, again, good question, a tough question, which you are good at throwing at me all the difficult questions. But let me try and answer this. Indian Navy is a reasonably big navy and reasonably strong navy. Indian Ocean area, as you know, that the diameter is roughly 3,000 kilometers. So you're looking at 3,000 kilometer diameter, and if you draw a sort of circle, it's a very huge area. No one navy can ensure security in such a huge area, and therefore we have coalition partners, we have friends. For example, the U.S. Navy is a very close associate. So is Japanese Navy. So is the Australian Navy. Now, from the time the Houthis have started attacking, the commercial ships in the Red Sea area, as a revenge of what is happening in Gaza. The piracy and hijacking issues by the Somalian pirates has increased. I think I had mentioned in your last program that to my analysis there is a connection between Somali pirates and Houthis action in the Red Sea. What could be the connection? That Houthis are being supported by a country which is under sanction, and Houthis are obviously running out of cash, running out of ammunition for which they require cash. And they have activated these pirates so that with hijacking ransom, the money can be used to buy ammunition. I have a very strong feeling sooner or later, I'm sure it will come out. Because pirates are, if you see those people, they are very poor people. They have just been given one Kalashnikov, and they have become experts. So the cases of piracy has increased manyfold from the time the Houthis have started attacking it. I think it is not a coincidence. I think there is a connection. This is a terror financing method,
and all piracy at sea finally lands up in ransom, which actually goes back to fund the terrorism in various parts of the world. So the Indian Navy it is not only Indian merchant ships. Because we believe in free and open sea, because we are signatory to the United Nations Convention on Laws of the Sea, UNCLOS, therefore we ensure the free passage to everybody, every country whose ships are passing through Indian Ocean. As you know, that 90% of the traffic in the Indian Ocean or anywhere in the ocean is by global commons. People, countries who are who are in their own carrying trade, commerce, because of the prosperity of their people. So it is our commitment as a big country, as a big navy, that we make sure that the sea lanes of communication are secured not only for Indian ships but for everybody. That could include a Chinese ship, Chinese merchant ship. That would include a Pakistani ship. So therefore, you would have seen that every piracy attempt which has come out into the Indian Ocean, they have been challenged by the Indian Navy ships. They have gone, our marine commandos have been airdropped by the Air Force aircraft, 2,600 kilometers from mainland India. Our commandos have boarded the ship being hijacked. They have taken the pirates into their captivity. They have released the crew and they have brought the pirates to India, and now they are being tried in the court of law. So this is the Indian Navy's first duty, is to ensure security of sea lanes of communication, and doesn't say that it is only for Indian ships. No, Adiji, we do it for every country. In fact, you just saw recently a ship was flying a Malta flag. It had crew from countries which you don't even know who are the Maltese flag. It had some Iranians. It had some Filipinos. It had some people from Somalia, in fact. So, and similarly, there was a ship which was a Iranian flag, and it was manned by Pakistani crew. All of them have been taken to safety and sent to Pakistan. So we have this duty towards people, duty towards the world, and that is all we are doing, right? We have P-8I aircraft, which is same as the Poseidon of the US Navy. We bought it around the same time. We have good interoperability because of the equipment being same. We can convey all our messages to US Navy, which we do all the time in any case, because we have this maritime domain awareness connectivity, not only with US. We also have 2+2 agreement with Australia, with Japan, with France, and with US, obviously. So wherever we have this 2+2 agreement at the ministerial level, we exchange every intelligence. So everybody knows what are we doing where. And we are not doing something which is happening without the knowledge of US Navy. No. Everything is happening with knowledge. We are absolutely together. We are keeping everybody informed and they know what we are doing. So we use the P-8I. We also use the MQ-9, the drone, which we have bought from US, and we're buying some more. 15 more or 18 more are being bought. They have been a big help. They are the ones who can track, can withdraw the manned aircraft and can use these drones for 20 hours, 22 hours. And they have really been extremely good in spotting, tracking these pirate ships, tracking the hijacked ships, and helping the Indian naval destroyers or the frigates to send their marine commandos and board that ship and capture the pirates. So it's a common good that the Indian Navy is doing, really, and I don't think anybody should be worried. And we don't have any occupational sort of intention. No, India has never. You see the history. India never gone and attacked anybody. You only protected yourself. The only time we have to intervene was in Bangladesh, which was East Pakistan, because we had very large number of refugees, 93,000, and people were paying taxes to feed them. So that is why we had to run. And once it is independent, we came back. We haven't done anything like that. So I think that the Navy's perception is that sea lanes of communication have to be secured.
because it is Indian Ocean. If Indian Navy doesn't do it, who will do it? गुड पॉइंट। बहुत सारे दर्शक हिंदी में भी सुनना चाहते हैं आपको, तो रिक्वेस्ट भी हो रही है, तो उन सब के लिए भी एक जो आपने ये सब पॉइंट्स किए इनको समराइज करके एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ये जो अ, आजकल एक भारत की गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट में टसल भी चल रहा है डीप स्टेट का, और जहाँ पे अमेरिकन स्टेट एजेंसीज जो है भारत की में इंटरफेयर करती हैं। एंड वी हैव सीन कि एरिक गार्सेटी का इंटरव्यू हुआ, विच आई टोटली डोंट लाइक। आई मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू लेना आता ही नहीं है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू होते हैं देन एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना नहीं होते। तो वी सॉ एरिक गार्सेटी को मैं बहुत जानता हूँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ, शायद उनको याद हो या ना हो, लेकिन बहुत बार मिल चुका हूँ एलए में। और ही उन्होंने एक बड़ा मतलब एक तरीके से स्मिता प्रकाश जो जो इंटरव्यू ले रही थी एनआई की, उसको यूज किया अच्छी तरह अपने पॉइंट्स रखने के लिए। और उन्होंने और आपने बिल्कुल क्लियर किया है कि नेवी का जो है ऑब्जेक्टिव कुछ और है, सी लेन्स को ओपन रखना, भारत का ट्रेड अफेक्ट ना हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत को अमेरिका के साथ फाइट करने की जरूरत पड़ जाए? और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, अमेरिका का बदल रहा है, अमेरिका टोटली विड्रॉ करना चाहता हो और भारत भी चाहता हो कि डिएगो गार्सिया का जो बेस है वो हमको मिल जाए, वेरी स्ट्रेटेजिक बेस राइट बे अंडरनीथ। क्योंकि और मैंने तो अपने शोज में बहुत प्रूव भी किया है कि रामायण में चागो रिचिपलागो लंका है। रामायण में लंका जो मेंशन है वो चागो रिचिपलागो है, विच इज वहीं पर है। तो आपको क्या लगता है कि रोल्स अगर कभी रिवर्स हो गया तो भारतीय नेवी का क्या रोल हो सकता है फ्यूचर में? आदि जी देखिए, कठिन प्रश्न है और इसका उत्तर देना भविष्य में क्या होगा तो भविष्यवाणी हो जाएगा, जो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि जो डेमोक्रेसीज हैं, खासकर भारत की जो डेमोक्रेसी है, हम हर चीज़ बातचीत करके समझौता करना चाहते हैं। और बातचीत हमारे और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका हमें काफ़ी चीज़ों में मदद कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है। और अभी हाल में आपने देखा कि हम लोग जबकि उन्होंने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा रखा था, तो भारतवर्ष को उन्होंने परमिट कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आपका जो पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, भारतवर्ष के लोगों को बड़ा महंगा पेट्रोल जो है वो खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ की प्रगति रुक सकती है, तो आप खरीद सकते हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसे पनिश नहीं किया हमें। तो हमारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है आदि जी अमेरिका के साथ एट द गवर्नमेंट लेवल, वो बड़ी सॉलिड है। ये आप जो डे टू डे अफेयर की बातें सुनते हैं, वो देखिए, वो डे टू डे चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक क्रिएटेड होती है। और इन छोटी-छोटी बातों के लिए एक 2 देश के बीच का समझौता जो है वो नहीं टूट सकता है ना? क्योंकि भारतवर्ष और अमेरिका जो है वो आपसी संबंध को, बायलैटरल रिलेशन को, द्विपक्षीय रिलेशन को द्विपक्षीय नहीं देखते हैं। वो उसको वैश्विक तौर पे देखते हैं कि इसका विश्व के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? क्या वो विश्व के ऊपर होने वाले इफ़ेक्ट कहीं इम्पैक्टेड तो नहीं हो रहे हैं इससे? और अगर नहीं हो रहे हैं तो बाकी चीज़, भाई डे टू डे घर के अंदर भी हमारा खटपट लगा रहता है। इसका ये मतलब थोड़े ही कि हम अलग हो जाते हैं। नहीं, हम बच्चे बिगड़ गए, उनको समझाया, कोशिश की, बैठाया, समझाया, ठीक किया। तो ये 2 देशों के बीच में वो ऑफ़िशियल्स का काम है इन सब चीज़ों को आयरन आउट करना। आपके एम्बेसडर गारसेटी साहब ने जो यहाँ कहा, दिस इज़ व्हाट एन एम्बेसडर इज़ सपोज्ड टू डू, to put across his country's point in the other country. Our ambassadors, I'm sure in their own way, they're doing something like that in different manner. तो ये जो है, इसको हम लोग कोई ऐसा, we don't see it as a, in democracy, different views are welcomed. Different views doesn't mean that you fight and get away. No. डेमोक्रेसी का मतलब ही, अब देखिए हमारे कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
कोalition गवर्नमेंट तो चलाया था ना यूपीए ने 23 पार्टीज का, कैसे चलाया? तो आप एक कॉमन थीम लीजिए जिसमें कि हम अग्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका और हमारे बीच, ये मैंने आपके प्रोग्राम में ही सिर्फ कहा और कहीं ये बात नहीं कही है, चूंकि यहाँ पे हमारे अमेरिका के बहुत सारे दर्शक बैठे हैं, भारतीय मूल के, या कुछ अमेरिकन भी होंगे। तो ये बता दूं कि भारतवर्ष और अमेरिका के बीच देर इज कंप्लीट कन्वर्जेंस ऑन मैरीटाइम इश्यूज। बिल्कुल समन्वय है। क्यों? कि हमारे जो एम्स हैं वो कॉमन है। क्या? हमें सी लेन्स को ओपन रखना है, नॉट ओनली फॉर इंडियन ट्रेड। वो आपने कहा, वो मैं उसको ऑब्जेक्ट करता हूं, नहीं, फॉर वर्ल्ड ट्रेड। हम दुनिया के ट्रेड को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी आपने जितने भी पायरेसी अटेम्प्ट्स देखे हैं उसमें कोई भी भारतीय जहाज नहीं था, एक भी नहीं था। तो हमने क्यों बचाया? उसके अंदर पाकिस्तानी क्रू थे, क्यों बचाया हमने उनको? इसलिए कि हमारा कमिटमेंट है वर्ल्ड को। हम भारतवर्ष के एक इम्पॉर्टेंट, भारतवर्ष एक दुनिया का इम्पॉर्टेंट कंट्री है। जरूर इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं हुआ हो मिलिट्री, लेकिन इंडियन ओशन में अगर आप देखें इस रीजन में, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री, मोस्ट पावरफुल कंट्री मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली, जो रेसिडेंट कंट्री है। ऐसे तो यूएस इज द लार्जेस्ट कंट्री प्रेजेंस, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक मैरीटाइम इश्यूज हैं उसमें कंप्लीट समन्वय है, और जहां तक कॉन्टिनेंटल इश्यूज हैं उसमें डाइवर्जेंस हैं और रहेंगी। उसमें हमारी कभी समन्वय नहीं हो सकती है। क्यों? आप इतिहास देख लीजिए। इतिहास से देखिए, अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंट को देखता है एज अ सुपर पावर, एज अ वर्ल्ड लीडर। वो देखता है, ऐसे देखता है पूरे विश्व को, और उसको कभी लैंड के ऊपर वहां पे किसी से पंगा नहीं लेना पड़ा था। भारतवर्ष अभी सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं हमें आजाद हुए, और हमारी सारी थ्रेट्स जो है वो नॉर्थ से आई है। ठीक है ना? तो हम उसको देखते हैं बिल्कुल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के एंगल से, और उसमें हमें जिस लोगों ने सपोर्ट किया है हम उसका महत्व देते हैं। और रूस को महत्व देने का एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, चूंकि हम लोग नॉन अलाइंड थे, तो हम लोग अमेरिका के गुड बुक्स में नहीं थे। और हमारे ऊपर जब हमला हुआ और हमने जब अमेरिका से कहा कि हमें मदद कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो उनका सिएटो सेंटो पाकिस्तान के साथ था। तो उन्होंने कुछ दिया नहीं हमें, तो हमें कहीं तो जाना था। दूसरा सुपर पावर उस समय रशिया था, रशिया ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, तो हमें कम कीमत पे उन्होंने वेपन सप्लाई किया। तो हमारा सिर्फ वेपन सप्लाई का एक खरीदारी और बिक्रीदार, एक कस्टमर और सेलर का एक रिलेशनशिप था। लेकिन जब उन्होंने भारतवर्ष के कॉज को यूएन में सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जहां की अमेरिका भी उस समय विरोध कर रहा था, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान का बहुत निजी संबंध था। ये काफी साल लगे अमेरिका को समझने में कि पाकिस्तान क्या है। सच पूछिए तो अभी भी अमेरिका नहीं लोगों को फेस वैल्यू पे ले लेता है, और इसीलिए उनको पालते रहे। अब देखिए क्या बात है, अब है वो तो उतना नहीं है। अब उनको लगा कि नहीं, वो गलती कर रहे थे। और भारतवर्ष रूस के खेमे में नहीं है, वो सामान खरीदता क्योंकि तुमने उसको दिया नहीं। ये सेक्रेटरी क्लिंटन, ब्लिंकन ने थोड़े दिन पहले, मैं पिछली बार आपसे मेंशन किया था जब मैं आया था लास्ट ईयर, उसी समय उन्होंने कहीं कहा था कि अगर आप चाहते हो कि भारतवर्ष जो है रूस का सामान नहीं खरीदे, तो हमें उनको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम उससे लेते हो और उसको पनिश भी करो। नहीं, अगर आपका वेपन नहीं ले रहा है तो आप उनको दीजिए, उनको बताइए, आप उनको पनिश मत कीजिए, क्योंकि आपने तो दिया नहीं आज तक। ये बहुत अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में हर कोई जानता है। तो बाकी लेवल पे जो हो रहा है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी, ये वो देखिए, दोनों कंट्री में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन अभी शुरू होने वाला 19 अप्रैल से, है ना? आपके यहाँ इलेक्शन नवंबर में होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में। तो अभी पूरे करीब 64 कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं इस साल, डेमोक्रेसीज में। तो ये होता है, जहां भी खुला प्रेस है तो आप देखेंगे स्टोरीज प्लांट की जाएंगी, और इनमिकल कंट्रीज जो हैं वो कहीं किसी फ्रेंडली कंट्री के प्रेस को यूज करेंगे, और ये सब चलेगा। और आप देखेंगे ये जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
तो अभी भारतवर्ष में क्या है, भारत चूंकि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग सुन रहे हैं, देखिए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जो है, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर नॉट ओनली इन इंडिया, इट वर्ल्ड वाइड। 76% उनकी अप्रूवल रेटिंग है वर्ल्ड में आज। तो ऐसा लगता है जो अपोजिशन पार्टीज है उनको ऐसा लगता है कि उनको उनको बदनाम और डिमीन करने का एक तरीका ये भी है। क्यों? कि आपने कहा ना सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि फेक न्यूज जो है ना वो जल्दी पकड़ता है, और बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि फेक न्यूज कौन सा है। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं भारत। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी चाइना जो है आपके इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा था, अब फिर करेगा। अब लोग कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने वार्न किया इंडिया को कि तुम्हें भी, तुम्हारे में भी इंटरफेरेंस होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट ने वार्न किया ओपनली। सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन चीजों से वाकिफ होना पड़ेगा, और ये चीजें जब होंगी तो हमें ये 1 मिनट के लिए पॉज करके सोशल मीडिया में लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या कहीं ये किसी का हथकंडा तो नहीं है। 90% टाइम्स यस, 90% टाइम्स हथकंडा होगा, हर हर इलेक्शन के पहले होता है। अभी गार्डियन ने कोई स्टोरी छापी थी। नो, गार्डियन इज, आई एम सॉरी टू से, बट दे हैव फेयर अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस। क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस, पाकिस्तानी डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस विलायत में भारतीय मूल के लोगों से कहीं ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसका भी फर्क पड़ता है। ये हमेशा से रहा है कि ब्रिटिश प्रेस हैज जनरली बीन लिटिल बायस्ड। तो उनका ही ये बेटा है। ये ये होता रहेगा, ये होगा, जरूर होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमें उन सब चीज़ों पे अभी थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना एक गलती होगी। तो सरकार की तरफ से जो आते हैं बयान, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट कभी नहीं होंगे, क्योंकि दे आर आंसरेबल इन द पार्लियामेंट। अगर आंसरेबल है पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठकर उसका पता लगा सकती है। डेमोक्रेसी ऐसे काम करती है, ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना, ऑटोक्रेसी नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो इसलिए हमारे ख्याल से ये सारी बातें हैं जो कि अभी हमको थोड़ा डिफ्लेक्ट करती हैं। और जहाँ तक नौसेना का प्रश्न है, नौसेना नेवल एविएशन बड़ा स्ट्रांग है हमारा। हमारे पास अभी 2 कैरियर हैं, दोनों पे हम MiG-29 जहाज उड़ा रहे हैं। और अभी सुना है मैंने कि शायद वो राफाल नेवी के पास भी आने वाला है। तो हमारी सेना तो देखिए, हम तो भारतवर्ष की भारतवर्ष की सेना तो जो हुक्म होगा वही करेंगे। हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। हमारा काम है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना। आप हवाई जहाज यूज करो, आप ड्रोन यूज करो, शिप यूज करो, सरकार ने हर चीज दिया है। जो हम खुद नहीं बनाते वो बड़े पैसे दे के खरीद रहे हैं। धीरे धीरे हमें अमेरिका मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया मदद कर रहा है। हम भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम तो बहुत पीछे थे। अब इसको आगे लाने में, आत्मनिर्भर होने में तो वक्त लगेगा। मोदी साहब लगे हुए हैं पिछले 5-10 साल से। तो हमें लगता है कि हमारे और अमेरिका के बीच में इस तरह की टक्कर कि हम एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, भारतवर्ष लड़ाई में बिलीव नहीं करता है। आप हाँ, हमको आके पीटिएगा तो हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन हम खुद जाकर आपसे झगड़ा ना, हम चाहेंगे कि आप बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा सीन नहीं होने वाला है। आपने आत्मनिर्भरता की बात करी और मुझे तुरंत याद आ गया टाइप 18, जिसके बारे में इंडियन नेवल डिज़ाइन में प्लानिंग चल रहा है। और इंडियन नेवल डिज़ाइन जो है, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो मुझे मालूम है कि किस तरह में आएगी यूजली ट्रैक के टेक्निकल डेवलपमेंट्स क्या होती है। तो एक और दूसरा मैं 2 क्वेश्चंस ऐड करूंगा इसमें। जैसे महाभारत और चाणक्य अगर आप देखें, भगवान राम रामायण भी देखें, युद्ध भी देखें, प्रोएक्टिव प्लानिंग करके भारत ने आक्रमण किया। भगवान राम ने लंका पे जाके आक्रमण किया, करना ही पड़ा उनको, कराया उन्होंने। और महाराज युधिष्ठिर की सेनाएं देखें तो 1 साल भी शांति से नहीं रही। 36 वर्ष राज किया जब उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद, 1 साल भी युद्ध के बिना नहीं निकला। हमने निरंतर आक्रमण किया जहां भी अधर्मी थे। और आज के समय में हम लोग देखते हैं कि ये सारी जो सारी शक्तियां हैं, एक तरीके से आप देखेंगे कि
भारत के डेवलपमेंट को रोकने के लिए लगी हुई हैं कहीं ना कहीं से, सो दैट दे कैन लुक बेटर, अब उनके लोगों के लिए। अमेरिकन मीडिया को आप देखें, आप अमेरिका में देख ही रहे मीडिया को, कितना एंटी गवर्नमेंट है। कोई भी मीडिया उठा लीजिए, सोशल मीडिया तो पूरा कर दिया है। और फिर उसी में एक इशू आता है बाल्टीमोर का इंसिडेंट, जो कि सभी नेवल जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके लिए एक बड़ा चिंताजनक विषय भी है। कि अभी तो लॉरा लोगान करके एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि साइबर अटैक है वो। और शिप जो कंपनी है उसने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, हम लोग इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि ये साइबर अटैक है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट। तो वो एक क्लॉज होता है एग्रीमेंट में, लीगल क्लॉज होता है कि ड्यू टू नेचुरल एनवायरमेंटल कॉजेज और फोर्सेस बियॉन्ड अवर कंट्रोल, फोर्स मेजोर। जी। सो फोर्स मेजोर क्लॉज उन्होंने यूज किया, कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। भारतीय नेवी में भी मुझे ऐसा लगता है, अभी अगर एक कमर्शियल पूरा बाल्टीमोर पोर्ट बंद हो गया एक साइबर अटैक की वजह से, और अमेरिकन पोर्ट आपको मालूम है काफी अंदर जाके बनाते हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, आपको काफी लैंड के बीच में से रास्ता जाएगा, देन यू रीच द एक्चुअल पोर्ट जहाँ पे अनलोडिंग होगा या लोडिंग होगा। तो डू यू थिंक कि वो सिचुएशन भारत में भी आ सकता है? आदि जी, पहले तो मैं महाभारत और रामायण से प्रारंभ करूंगा क्योंकि आपने उसका जिक्र किया है। तो देखिए, महाभारत और रामायण उस समय हुआ था जबकि ये सारे प्रदेश जिनकी आप बात कर रहे हैं वो एक बृहद भारत के अंग थे। बिल्कुल और सही। हमारे बृहद भारत के अंदर ही बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स, एज यू कॉल इट, रजवाड़े थे। तो वो आपस में उनका झगड़ा जो है वो एक एनिमी के ऊपर अटैक के तौर पे नहीं देखा जाता था। वो देखा जाता था हम अपना इन्फ्लुएंस कैसे बगल वाले राजा को हम अपना मित्र बना लें ताकि वो हमें हमसे बाद में लड़ाई ना करे, है ना। तो वो, और चाणक्य नीति भी यही कहता है कि अपने आपके आपके एनिमी का जो नेबर है वो तुम्हारा फ्रेंड होना चाहिए। तो उसी हिसाब से महाभारत में भी, चूंकि कितना छोटा देश था, युधिष्ठिर का जो देश था, जो भारतवर्ष तो था नहीं, इंद्रप्रस्थ तो था, कितना छोटा था। मैं अभी थोड़ा वो, सा मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेट करूंगा। हाँ तो वही मैंने, मेरा रिसर्च भी रहा है, तो मैं मैप भी दिखा रहा हूँ दर्शकों को कि जी दे कैन सी व्हाट आई एम शोइंग एक्चुअली। तो ये जो मैप है, अभी मेरी बुक्स के अनुसार, मेरा खुद के रिसर्च के अनुसार, इधर हस्तिनापुर है इस एरिया में, ये जी उत्तर प्रदेश के इस एरिया में जी हस्तिनापुर है। और इस एरिया के ऊपर उत्तर कुरु शुरू होता है, और मध्य प्रदेश इधर की तरफ आता है, और चीन भारत को कर देता था। चीन जो छोटा सा प्रांत है इस तरफ में, मलय देश बोला जाता है उसको कभी कभी, इस एरिया को भी इस एरिया को भी। तो ये तो महाभारत का ये जो नया एक्सपैंडेड मैप है जम्बू द्वीप का, वो मेरे जैसे दो तीन मैंने, नीलेश ओक जी ने, काफी लोगों ने प्रूव किया है अभी अभी थोड़े दिनों पहले हमारी पुस्तकों के थ्रू। तो अब हम महाभारत को जब हम देखते हैं तो हम लोग जम्बू द्वीप के रेफरेंस में देखते हैं, विच इज एशिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो उत्तरी जो दिशा, उत्तरी जो बाउंड्री है भारत की, वो उत्तर कुरु पे शुरू हो रही है, विच इज ये छोटा सा मेरा एरो आपको लोगों दर्शकों को दिखाई देगा, यहाँ से ऊपर शुरू हो रही है। तो हस्तिनापुर जो है, यहाँ पे कर वसूल रहे हैं, सारे देशों से कर वसूल रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे जो राजा थे, पांड्या हैं, चोल हैं, उस समय भी चोल फैमिलीज हैं, पांड्या राजाओं को भी चोल बोला जाता है। और और साथ में दे आर ऑल्सो कलेक्टिंग कर फ्रॉम चीन ऑल्सो, वो रेफरेंसेस। और और बालिक के देश जो है, इस एरिया को बालिक के देश बोलते हैं, उसके पश्चिम में ये है तुर्कियामान, तुर्कियामास शब्द संस्कृत में यूज किया गया है टर्की के लिए। तो पूरा का पूरा रीजन में हम देखेंगे इन्फ्लुएंस तो बहुत जबरदस्त है, और घोड़ों से गए हैं। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो निरंतर धर्म अधर्म के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने प्रोएक्टिवली एक्शन लिया है। प्लीज सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया, प्लीज नहीं कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, बिल्कुल ठीक कहा। एंड धन्यवाद, आप बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट आपने। देखिए आदि जी, ऐसा है दैट आप जितने युद्ध उस समय हुए हैं वो धर्म के नाम पर हुए हैं। अगर बगल वाला अधर्मी है और उसका इन्फ्लुएंस आपके राज्य पर हो रहा है,
तो उन्होंने अवश्य, खासकर जो मैं जहाँ तक रामचंद्र जी की सेना थी, भगवान राम की सेना या युधिष्ठिर की सेना थी जिसमें कि भगवान कृष्ण खुद आए, उन्होंने साफ कहा है, जब जब धरती पे अधर्म का घड़ा भरने लगेगा तब तब मैं इस विश्व में मनुष्य रूप लेकर आऊंगा उस घड़े को फोड़ने के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अब जो है, हम दूसरों के विष का घड़ा फोड़ना हमने बंद कर दिया है, लेकिन हमारे देश में अगर कोई विश्व का अगर विष का घड़ा भरने लगेगा तो हम उसको इंटरनल सिक्योरिटी के माध्यम से उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम बाहर जाकर अब हम किसी और देश से कर नहीं वसूल करते हैं, हमारी अपनी प्रजातंत्र हो गई है। पहले ये प्रजातंत्र प्रजातंत्र था, लेकिन छोटे छोटे जैसे अभी स्टेट्स हैं उससे भी ज्यादा 500-600 स्टेट थे, अभी हम 28 स्टेट्स हैं। तो डेमोक्रेसी में हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि हम हमारे नागरिक ही, हर आदमी का स्टेक है डेमोक्रेसी में। और उस समय क्या था, उस समय जो जहां तक लैंड के मालिक का था वो राजा के पास होता था, राजा ही पूरे लैंड का मालिक होता था, और वो उनकी दया के अनुसार जो है प्रजा उस पर खेती करती थी, खुद भी खाती थी और राजा को भी देती थी, अपना कुछ कर देती थी। तो वो थोड़ा सिस्टम अलग था, इसलिए राजाओं का जरा ज्यादा रौब दाब था। लेकिन अब डेमोक्रेसी है, हम तो वेरी डिफरेंट सिस्टम दैट वी आर लिविंग इन। तो ये जो है, आपने आपने जो कहा बिल्कुल ठीक ही कहा है, रामायण के टाइम में हम, लेकिन अब जो है वैसा सीन होना वैसा सीन होना हमारे ख्याल से जो इंटरनल डिफिकल्टीज हैं वो डेमोक्रेसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग रिप्रेशन नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर चीन में हुआ, तो चीन में तो आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर वो ज़्यादा खर्च करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी से। तो इसलिए ये आवश्यक है उनके लिए, चूंकि सिंगल पार्टी रूल है, तो वो आवश्यक है उनके लिए कि वो अपनी जनता को खुश रखें। नहीं तो अगर वो सारे रिवोल्ट कर गए तब तो सिंगल पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर वो कम्युनिज्म जो है वहां पे लुढ़क जाएगा। तो ये चिंता वहां के जो है शासन करने वाले, उनको ये चिंता हमेशा लगी रहती है कि वो जो है वो जरूर अपने लोगों को थोड़ा खुश रखने की कोशिश करें। अगर नहीं रखते हैं, अगर वो खुश नहीं है, चाहे देखेंगे बीच में कहीं भी उनका झगड़ा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि सप्रेशन जो है, रिप्रेशन आर वेरी स्ट्रांग, वेरी टफ। लोग गायब हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहाँ है। द होल बड़ी आर्मी, होल पुलिस, दे आर ऑल वर्किंग फॉर दैट कॉज। सो आई थिंक दैट दीज systems have changed quite a lot। और जहाँ तक हम डेमोक्रेसीज का जहाँ तक प्रश्न होता है, तो डेमोक्रेसी, अब देखिए भारतवर्ष डिएगो गार्सिया को क्लेम करेगा, ये हमारे ख्याल से ये थोड़ा सा फार फेच्ड है। इट इज नॉट पॉसिबल। हम प्रजातंत्र में चूंकि वी आर वर्किंग इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। पहले हमारा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। वहां पे रजवाड़े खानदानों का था और एक भारतवर्ष, बृहद भारत का ये था। तो सच पूछिए तो चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास के टाइम से ये जो बृहद भारतवर्ष है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होने लगा, जो कि चाणक्य के नीति के हिसाब से वो उस टाइप से बढ़ने लगा। लेकिन उस समय भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारे हम में मिल जाओ। तुम भारतवर्ष में हो, तुम अपने अपने रजवाड़े चलाओ, लेकिन उसमें छोटे छोटे रजवाड़े कम हो गए थे बहुत। और अगर आप देखें, अगर उसकी थोड़ी तुलना करें, तो हो सकता है कि आज जो हमारे स्टेट्स हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो, लेकिन वो सारे डेमोक्रेसी हैं। वहाँ तो लोगों की वहाँ राजा तो नहीं है, वहाँ तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं, प्रगति हो रही है, ये हो रहा है। तो हमारे ख्याल से क्लेमिंग डिएगो गार्सिया एटसेट्रा इज नॉट पॉसिबल इन ए नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट। तो नेशन स्टेट जो है वो, जो ज्योग्राफी लीगली हमारे पास है, जो हम स्वतंत्रता के वक्त में हमें जो दिया गया है, तो हम उसी की रक्षा करना चाहते हैं, उसके आगे हम नहीं जाते हैं। तो उसके आगे जाएंगे भी नहीं, कोई भी देश नहीं जाता है। और जहाँ तक ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, देखिए वो तो चाणक्य ने भी कहा है कि भाई जासूस होने आवश्यक है। हम तो उस समय की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड थर्ड सेंचुरी एडी। तो उस समय से अगर ये है, और दैट इज स्टेट क्राफ्ट, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी,
economy, coercion, etc. That will happen, and competition will become more because population is increasing. You require more resources to feed the people. चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी फूड सिक्योरिटी है. Do you know they only 20% of their people can be fed in what is grown in China? Everything is imported. इसीलिए उनके लिए सी लेंस कम्युनिकेशन वगैरह सब उसी जहाजों से आता है. तो ये द सिचुएशंस आर डिफरेंट, द थ्रेट्स आर डिफरेंट, द इन्वायरमेंट इज डिफरेंट. फिर आपको ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे भी कुछ देख रहे हैं कैसे वेदर हो गया है. आई एम सिटिंग हियर इन एरिजोना, इट शुड हैव बीन समर. द टेम्परेचर हैज फॉलन टू 9-10 डिग्रीज. अचानक 4 दिन पहले बारिश हो रही थी, गर्मी 26 डिग्री, फिर देख रहा हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर 16-17 से ज्यादा ऊपर नहीं गया है. तो ये तो अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर तो हमें पनिश करेगा ही. तो थोड़ा सा हमें तो इन चीजों में भी बिलीव रखना पड़ेगा. वी हैव बिलीव इन आवर in our holy books. In any case, as I mentioned in your last program, none of it is mythology. Mythology emanates from the word myth, and nothing is myth. आप देखिए हर चीज का एक्सकेवेशन हुआ है, हर जगह का जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकल आया है, इंक्लूडिंग अब तो रामायण डेज का भी निकल आया है. आपने देखा तभी तो वहाँ पे अयोध्या में मंदिर बना है. वहाँ तो नीचे गए, वहाँ के एएसआई वालों ने कहा कि नहीं, अंदर तो यहाँ मंदिर था, उसके ऊपर. तो ये अब महाभारत का तो करीब करीब बिल्कुल क्लियर है. टाइम फ्रेम्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड एवरीथिंग हैज बीन डन. तो I think we have to go with the time, and as long as people understand that, and everybody can't be happy, whole world can't be happy. There will be differences, and as I mentioned, between two countries, perceptions are different, so there will be different. How do we minimize the difference? How do we converge? हम एक दूसरे की कहाँ कहाँ हम में समन्वय है, उसको लेके हम आगे चलें. तो ये होता है डेमोक्रेसीज का मेन 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 इशू होता है डेमोक्रेसी में, मेन फंडामेंटल. आदि जी. एक्चुअली मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ इधर कि द वे द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग नाउ, अगर हम देखें, और सैथोलॉजी से हम लोग प्रूव कर देंगे इस बार मायन के हिंदू कनेक्शंस. बहुत डेटा है मेरे पास और मैं वहां पे जाके प्रूव करूंगा, दर्शकों को बता दूं. तो डू जॉइन सैथोलॉजी ऑन मेनी ऑफ दीज फोरम्स वी हैव. लाइक पेरू हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि वहां पे सुग्रीव की सेना गई थी सीता की खोज के लिए. हमने वो लास्ट ईयर ही प्रूव किया है. और लोग सोचेंगे कैसे पहुंच गए साउथ अमेरिका में. तो उसका नाम आता है पुष्कर द्वीप रामायण में. साउथ अमेरिका को पुष्कर द्वीप बुलाते हैं, कंफर्म्ड है वो. उदयगिरी पहाड़ जो है उसको एंडीज बुलाते हैं आजकल. कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ भी नहीं है. और लोगों को शायद आश्चर्य भी होगा, अनंत नाम के पहाड़ हैं, आज भी नाम उनका अनंत ही है इन साउथ अमेरिका. दे कॉल इट अनंता. और वहीं से शायद नाम आया अनीता, और ये सब नाम उसी तरफ से आए कि साउथ अमेरिका में काफी महिलाओं के नाम अनीता भी होते हैं, विच इज वेरी कॉमन. एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे, और फिर मैं इस शो को रैप करूंगा और फिर अगले शो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास. एडमिरल साहब से उनको क्वेश्चन करने के लिए, उनको और कुरेदने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास. तो अभी हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में फूड सिक्योरिटी की आपने बात करी, लैंड की बात करी आपने. अगर पृथ्वी का पूरा मैप देखा जाए तो हर रीजन दूसरे रीजन पर डिपेंडेंट है. कोई भी रीजन, कोई भी इंडिपेंडेंट रीजन नहीं है. और उस चक्कर में उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि नेशन स्टेट ये रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसमें लग्जमबर्ग जो कि एक टाइनी सा देश है उसका भी एक वोट है. मोनाको का साइज जो है, मोनाको जो नेशन है, उस वो न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क का आधा है. मतलब हाफ सेंट्रल पार्क इज मोनाको, इतना ही साइज है उसका. उसका भी एक वोट है यूनाइटेड नेशंस में. तो यूनाइटेड नेशंस के अगर हम नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे तो फिर तो भारत और मोनाको कैसे इक्वल हो सकता है. भारत और मोनाको इक्वल नहीं हो सकता, अमेरिका और मोनाको इक्वल नहीं हो सकता. लेकिन उस पर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे कि यूएन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्या वो फेवर कर सकता है 1.4 बिलियन पीपल. अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की पॉपुलेशन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंबाइंड से भी ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है.
भारत में जो लोग वोट करते हैं, 880 मिलियन लोग वोट करते हैं, 88 करोड़ लोग वोट करते हैं, विच इज कंबाइंड वोटिंग पॉपुलेशन पूरी वेस्ट का, जो भी वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की वोटिंग पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन का दुगना है और उसके बराबर है अप्रोक्सीमेटली। तो इनइक्वालिटी तो वहाँ बढ़ जाती है, उसके साथ में नेवल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब भारत के ऊपर दुनिया देख रही है कि क्या वो हमको बचाने केप ऑफ गुड हॉर्न साउथ अफ्रीका की तरफ आएंगे, क्या हमको बचाने के लिए फिलीपींस की तरफ आएंगे, जैसे भारत सप्लाई भी कर रहा है वेपन्स। क्या ऐसा भी हो सकता है अभी मॉनरो डॉक्ट्रिन में कि क्या भारत साउथ अमेरिकन को बचाने के लिए आएगा फ्रॉम अमेरिकन इंपीरियलिज्म? ये सब टफ क्वेश्चंस है। और एक मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जो इंडिया की, अगर हम पीपीपी के टर्म्स से देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी, बिकॉज इसी तरह सीआईए भी कैलकुलेट करता है, पीपीपी के उसमें कैलकुलेट करता है, तो चाइना नंबर 1 आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर इंडिया आता है। $12 ट्रिलियन का माना जाता है भारतीय इकोनॉमी को। तो अगर हम उस एरिया से देखें तो भारत का रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत नेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी चौगुना ज्यादा बढ़ गया। और कभी कभी इस नेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी विश्व के ऊपर है, सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं है। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन डेवलपिंग? नहीं, you're absolutely right. हर देश के पास हर चीज नहीं होता है, उतनी रिसोर्सेज नहीं होती है। और हम किस तरह से ग्रो हुए हैं, कब आज़ाद हुए हैं, किसका शासन था, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ऑल दोज थिंग्स आर क्वाइट complicated and complex questions. And therefore, what you have the cooperative mechanisms, what you have with multilateral, United Nations were created for that reason. We already have WTO. All that is existing. But you see, whenever you make a systems like this, there will always be loopholes, and people will actually use the loophole more often than the main system. And this is the nature of human being. ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि हम जो है, जो मूल रास्ता तो देखें, लेकिन मूल रास्ते के बीच में where there are loopholes, try and make use of that loophole, and it is officially taught, how to use the loophole. So I think that, as far as the militarily is concerned, India has never gone to any country without invitation. श्रीलंका में भी हम लोग गए थे तो वहां से लिखित आया था कि आप हमें आइए मदद करने के लिए। और जब लिखित आ भी जाएगा तो कोई आवश्यक नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंडिया विल, बिकॉज इंडिया विल सी दैट कैन आई सपोर्ट दिस ऑपरेशन, am I economically capable enough to support the Indian armed forces in a particular country. Economically, yes, we can. I mean, that's a matter of developing your economy, developing your industry, developing your maybe agriculture, developing your manufacturing. Wherever those supports are required, India will. Now, day before yesterday or 5 days back, the Indian External Affairs Minister was in Philippines, and he said that, free and open sea, we are with you. So obviously, the government of India feels that if there is something to do with free and open sea, maintaining the commercial shipping lanes open, if Indian Navy can do anything, the government can do anything. If it has to deploy Indian Navy, the government orders, the Indian Navy will go. Do we have enough resources? Well, I mean, the people who are running the affairs, they will know whether they have enough or not, because I've been out of Navy for 10 years now. But I think that these kind of give and take will happen. These kind of give and take will continue, and that is why you have these multilateral organizations, bilateral organization. We have trade deals, for example, in spite of our relation with China, for both America and India, China remains the largest trading partner, even now. So, in spite of so many bans, because you just cannot do away, we cannot, as they say, you can't decouple. De-risk, yes, I know, and de-risking can be done. You identify which all areas that you want to move. For example, right now the supply chain shifting is going on, and of course China is complaining like hell, that he's saying that you can't even do that because we manufacture most of the things in the world. But who's shifted the manufacturing plants there? The people who could manufacture themselves, for example, America or Europe. So sometimes what happens, for a short term benefit,
we tend to miss out on the long term disadvantages, right? But then, you can foresee only so much. And in democracy, this is a problem. Problem is that you don't have the continuity of the same thought process in different governments, right? Republicans will think differently. The Democrats will think differently. So is the case in India. India is worse. You have coalition ministry of 23 types of parties, and all 23 have different aims. How do you run the country? So I think that the taking a long term view can be taken only if it is of national security. Rest of the things little bit difficult, because on national security every party will be united because you want protection of your own country. You don't want anybody to come and militarily hurt you. Nobody want to come and occupy. In fact, US never thought that somebody will come and hit them in their own country till 9/11 happened. I mean, Homeland Security Department nobody had heard of. अभी बाल्टीमोर में भी छुपा रहे हैं, वो Same भी thing. छुपा It can happen. It can happen to any country. It can happen here in India, as you mentioned. Yes, it can. But what do you have to do? You have to learn lessons, because this cyber war, information war has crossed all. There are no boundaries. It is free flow. How do you prevent them? You have to have methods by which you can try and protect. So technologically you have to remain concurrent ahead, and you are a technology man yourself, so you have to be ahead with time. As you see today, the terrorist organizations are believed, whichever terrorists we have got, they are technologically as advanced as you are. Otherwise, the drones will not fly from some part, come into Indian Ocean and hit a ship which is just about 200-300 miles away from Indian coastline. Drone comes, fires missiles on a merchant ship, damages it, that catches fire. Then Indian Navy ship goes, to extinguish that fire and then tow that ship into the harbor to get it repaired. So I think that the terror organizations are not some foolish people. They're people like you and me. They're disgruntled people. They're mentally derailed people who have only got devious things in mind. Their cyber organizations are as strong as my cyber organization. Moment something is devised, he knows what is it. पढ़े लिखे लोग हैं. तो IIT से पास आउट होता है आजकल तो. Yeah, there you are. So it's an ideological difference. The guy who came and did the 9/11 attack on the World Trade Center was a pilot, and he had lived in America for so many years. So you can imagine that how ideology can do, indoctrination can, how it can change. So psychologically, mind game, etc., is a very difficult thing. That is where people like you come into being. That you believe in the texts of the old times of any religion. No religion teaches any violence. No, he said yes. If you are in Indian case, it is dharma युद्ध. रामायण में भी आपने कहा कि जाके अटैक किया. You didn't agree with me that India doesn't. India did. At that time, the concept of nation state was not there. It was all बृहद भारत. और उसके अंदर रावण ने एक तरह का अधर्म किया. किसी और की पत्नी को उठा के आप चोरी छुपे जाके ले जाके अपने बंधक बना दिया, है ना. तो उसके लिए उस समय के लिए पनिशमेंट यही था जो राजा रामचंद्र ने किया या फिर कृष्ण जी ने किया पांडवों के साथ मिलकर. उस समय वही उतनी ही सुविधा थी, उतनी ही चीजें उपलब्ध थी, वही कर सकते थे. तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जहां पे वो उन सुविधाओं से उस पाप को नहीं मारा जा सकता था, वहां पे सुदर्शन चक्र भी यूज किया गया, है ना. वहां पे ऐसे वाण भी दिए गए जो कि मिसाइलों की ताकत रखते थे, उससे भी ज्यादा, है ना. तो अब ये है कि अब वो जो है आपकी टेक्नोलॉजी ने उसको कैचअप कर लिया, उसको भी पकड़ लिया है. तो ठीक है, हो सकता है कि अब जो पाप का घड़ा भरा और अगर ईश्वर को आना पड़ा यहाँ पे, तो हो सकता है वो कुछ और नई चीजें लेके आए, हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी हमसे भी ज्यादा हो. तो ये दीज आर
when you have what is in practice and what is our religion teaches, what is our historic books teach, uh, there will always be similarities. But the shape it has taken now, that gets driven by the technology and environment. So I would think that nothing has changed. You're right. But because of the definitions have changed, the manner in which we take action that has changed. फॉर एग्जाम्पल आपने अब जैसे कल हमारे रक्षा मंत्री ने बनाया कि अगर हम पर तुम टेरर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के उसको मारेंगे. इट्स अ बिग थिंग. ही इज टॉकिंग अबाउट दैट इफ देयर इज अ टेररिस्ट हु इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, we will come to your house, find that terrorist and kill him. Very big statement. If you look at the implication, it is not small. It has a lot of messages for many other countries. हमारे टेररिस्ट को तुम पाल के रखोगे, अगर हमारी दोस्ती है उसको नहीं एड्रेस करोगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे. सो दीज आर दो चीजें हैं. एक तो इलेक्शन का वक्त है, रक्षा मंत्री पॉलिटिशियन है, उनको अभी थोड़ा सा वो भी सिंपैथी जनरेट करनी है, बट लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया. बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ और उसका जो जवाब हुआ, चाहे उरी में जाके जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो दिखा दिया कि भाई आप अगर आप टेररिस्ट को पाल के रखिएगा तो हम आके मारेंगे उसको, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला किया है. तो कभी कभी क्या होता है कि हमला होने के लिए हम वेट नहीं करते हैं. हमें अगर पॉजिटिव हमारे पास इंटेलिजेंस है तो आप एक्शन लीजिए. थोड़ा प्रोएक्टिव होना तो आवश्यक है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न होता है. So I think that it's a very interesting subject, and I hope that you will keep me in the loop for your programs whenever it is. I will, if it fits into my time, I will watch it. Kindly send me the link ahead of time. Yes, I will do that, and I'll also call you for some group discussions we already have. Most certainly, I'll be very happy to come and speak. No problem. In fact, I'm going back on the 10th, and on 16th I will be in Sri Lanka. There is a same round table on similar issues. Come back, then I go to Korea. I keep moving. I'm with the India Foundation, as you know. I'm the chairperson of the trustee board. So we have a lot of interaction with many countries. Kom Kapotia gave me your number. I know. Kom has written a book just now on the consciousness. He's excellent. Just been launched. Book launch was by Dr. Karan Singh did the book launch. Yeah, उनको मैंने बुलाया है शो पे, आएंगे वो थोड़े दिन. He's a very good friend of mine. Very good. Oh, he is excellent man. He is with us. He is our distinguished fellow at the India Foundation. रुद्र का एक क्वेश्चन है, जस्ट हाँ ना में जवाब दीजिएगा. Due to piracy attack, is relation India getting adversely affected or not? Between India and Iran? No. And Iran? No. No. Rudra Chaudhary from Carnegie? Yes. Okay. And दूसरा है कृपा शंकर जी का है, मालदीव से क्या अभी चीन को भगाया जा सकता है? वो तो अपने आप भाग जाएगा चीन को, मेरे हिसाब से. देखिए, हम जो है, हमारा भारतवर्ष की नीति ये है, हम वो करते हैं जो एक देश को दूसरे पड़ोसी के साथ करना चाहिए. हम चीन को भगाने के लिए नहीं जा रहे हैं. अब वो आ रहा है तो हम अपना कैसे अपनी रक्षा करने के लिए हम क्या करें. हम चीन को भगाने नहीं जा रहे हैं. वो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो चाहे किस कंट्री से क्या समझौता करता है, उसमें हम क्या इंटरफेयर कर सकते हैं. आपको खुद पता लगा, आप पहले दिन से कह रहे थे इंडिया आउट, अब अचानक आप कह रहे हैं कि इंडिया हमारा पुराना दोस्त है, हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, हमें हमेशा सपोर्ट किया है. तो धीरे धीरे उनके भी समझ में बातें आ रही हैं. तो ये तो अपने आप होगा. आप यू डू योर वर्क एंड टेक प्रोटेक्शन अगेंस्ट इफ देयर इज लाइकली टू बी सिक्योरिटी थ्रेट. तो हमारा ईरान के साथ संबंध बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा जब ये अटैक शुरू हुआ था तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, सबसे पहले ईरान गए थे. करेक्ट. आपने इसीलिए देखा होगा अभी एक भी हूथी का हमला भारतीय जहाजों पर नहीं हुआ है. बिल्कुल नहीं हुआ है ना. तो ये हमने एक बार भी नहीं कहा कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट है. हम तो इनफैक्ट उनका एक जहाज था जो कि हमने अभी उनका वापस किया उनके लोगों को. हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं. हमारा इनके साथ सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल बहुत बहुत पुराना संबंध है. इसलिए देखिए, वही मैंने कहा ना, जो ये बड़ी चीज, देखिए अभी आप ईरान जाएंगे, आप गए हैं या नहीं पता नहीं, दोज हु हैव बीन टू Tehran गया. if you ask anybody in Iran,
they will all tell you that whenever we are in difficulty and we want some divine intervention, we look to the east. That's right. हम भारत की ओर देखते हैं. In fact, this has been told to me by an Iranian ambassador in 2012-13. Ansari. He was here and he had come to Bombay, and I asked him to give a talk to our officers, and he spoke. And in public forums, and he knows these are most of military guys. I mean, what do they have to do with politics? So he spoke because the Iranian submarine was visiting India when it was under sanction. So it's okay. America also knows that we have good friends with Iran. That you see, in diplomacy, one is not at the cost of other. अगर हमारी ईरान से दोस्ती इसका ये मतलब नहीं और अमेरिका की दोस्ती नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है. नो. हमारे रूस से दोस्ती इसका ये मतलब नहीं कि हमें अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं. और ये समझते हैं एक दूसरे की बात को. दिस वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी कन्वर्जेंस, देयर विल बी डाइवर्जेंसेस. So, as I mentioned, as far as the continental issues are concerned, India and America will always diverge because our perceptions about the world are different, our history is different, the manner in which we have grown is different. America has got a worldview. We have a very regional protection, in our integrity of our territorial stuff. That is how we look at North. तो वो तो होगा ही by and large. सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो. और वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद. Many thanks to him for coming on the show. And it was a long pending show, and today we happened. And आज उन्होंने खुल के बात करी है. So do share this talk with many people. कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है. कुछ share with everybody and let them know what we are talking. And at Sathology, we try to give a very balanced perspective. And I will not, मैं jingoistic बात नहीं करता हूँ channel पे, because we want to be driven by facts on the ground. Or facts on the ground are different than what social media tells you generally. Facts on the ground are, or mainstream media tells you, facts on the ground are, there are more good-hearted people than bad-hearted people in the world. And इसीलिए दुनिया चलती है. Even in America, totally you cannot say that America is anti-India or this thing. America is running its own there is obviously there is a colonial hangover. Lekin at the end of the day, America's 70% food comes from outside of United States. तो उनको भी दुनिया पे dependent होना ही पड़ेगा. And India also plays a major role. So thank you all very much for joining the show today. I'll see you in the next show. और उसमें हम लोग एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ आएंगे with a lot of research. Thank you. धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम. And keep in good health, be good, be happy. See you again. धन्यवाद आदि जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए. Thank you.